क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूँ कि इस वक्त इस प्लेन का पायलट मैं हूँ? जी हाँ, मैं जो सड़क पर गाड़ी चलाता है पर आज हवा में प्लेन उड़ा रहा है, वो भी बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी ट्रेनिंग के। मैं कहाँ खड़ा हूँ? आपको लग रहा है मैं प्लेन के पास खड़ा हूँ? नहीं जी, मैं एक लेक में खड़ा हूँ, लिटरली। दिस इज amazing. Welcome back to another episode of Desi Tourist. Welcome to the most surreal day of my Alaska to Antarctica journey. आज हम सिर्फ ड्राइव नहीं करेंगे, आज हम हवा से बातें करेंगे। लेकिन हवा में उड़ने से पहले जरा रियलिटी को भी देख लेते हैं। और रियलिटी ये है कि आज की सुबह किसी 5 स्टार होटल में नहीं, बल्कि वैंकूवर के एक जिम के पब्लिक शावर में शुरू हुई है। मैं और मेरा काउच सर्फिंग होस्ट एलेक्स, हम दोनों के पास घर नहीं है और पब्लिक वॉशरूम में नहाना यही हमारी रियलिटी है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक और नए दिन में एक बढ़िया चीज करने जा रहे हैं। मैं हूँ अपने होस्ट एलेक्स के साथ। Here is Alex. Hola. ¿Cómo estás? वो मैक्सिकन है, आप उनको जानते हैं ऑलरेडी अगर आपने पिछला व्लॉग देखा है तो। हम निकल रहे हैं एक बहुत खूबसूरत जगह पे, स्क्वॉमिश की तरफ। स्क्वॉमिश एक बहुत ही खूबसूरत जगह है वैंकूवर एरिया में, यहाँ से करीब 1 घंटे दूर है। अभी हम दोनों नहा करके निकले हैं प्लैनेट फिटनेस से और फटाफट नहाए हैं और बाल भी अभी तक नहीं सूखे इनफैक्ट, और बस भाग रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहे हैं। बट बहुत ही खूबसूरत हाईवे की तरफ से होते हुए हम जा रहे हैं स्क्वॉमिश, जहाँ पर देखेंगे आप ये कमाल की चीज़ जो मैं करने वाला हूँ, जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है एज पर द टाइटल एंड इंट्रो। सो लेट्स गो। नहाने के बाद हम निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की तरफ। वैंकूवर एक बहुत बड़ा सिटी होने के बावजूद बहुत ग्रीन, क्लीन और काम है। सिटी के डाउनटाउन, स्टैनली पार्क और लायंस गेट ब्रिज से होते हुए हम पहुंचे सी टू स्काई हाईवे। वाओ! अगर आप वैंकूवर से स्क्वॉमिश ड्राइव करें, एक तरफ पैसिफिक ओशन, दूसरी तरफ पहाड़, बहुत सीनिक हाईवे है यार। वैंकूवर से स्क्वॉमिश करीब 1 घंटे का सफर है, तो जब तक मैं गाड़ी चलाता हूँ तब तक आप ये रिकैप सुन लीजिए। मेरा नाम है अमित, मैं इंडिया में बिहार से हूँ और मैं अकेला निकल पड़ा हूँ अलास्का से अंटार्कटिका, दुनिया के सबसे लंबे हाईवे से होते हुए, जिसमें अर्जेंटीना तक मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा और उसके आगे अंटार्कटिका क्रूज से। ये सफर शुरू हुआ था अलास्का के डेड हॉर्स से। पूरे अलास्का को क्रॉस करके मैं पहुंचा कनाडा के शहर एडमिंटन, फिर कैलगरी से होते हुए अब मैं पहुंच चुका हूँ वैंकूवर, जो इस देश का आखिरी शहर है क्योंकि इसके बाद मैं अमेरिका में एंटर कर जाऊंगा। अब तक टोटल 5200 किलोमीटर गाड़ी चलाकर मैं पहुंच चुका हूं अपने आज के डेस्टिनेशन पे, जो है सी टू स्काई एयर का ये ऑफिस। आज का मिशन है सी टू स्काई एयर के साथ उड़ना। ये वो कंपनी है जो ग्लेशियर्स के ऊपर सीनिक प्लेन टूर्स कराते हैं और मुझ जैसे पागल लोगों को अपने प्लेन्स उड़ाने का मौका भी देते हैं। सबसे पहले हमने पेपर वर्क साइन किया जिसमें लिखा था कि सारा रिस्क मेरा है। मुझे समझ नहीं आता हर एडवेंचर कंपनी पहले ही इतना डरा क्यों देती है। We're good to go? Yeah. Awesome, let's do it. We're good to go. Yeah. So, are you going to fly? Yeah, I'll be a pilot. Oh, awesome. So you are our pilot. Yeah, and then you're going to fly too. I'm excited. और मुझको तो एक और डर सता रहा था। ये मेरा पहला एरियल शूट है और मुझे एक कैमरा एंगल बाहर से चाहिए था, बट मुझे अपने कैमरा माउंट्स के ऊपर भरोसा ही नहीं हो रहा था। डर ये था कि प्लेन उड़ने के बाद अगर हवा के प्रेशर से ये माउंट खुला तो साथ में मेरा कैमरा भी जाएगा। पर डरते डरते भी मैंने कैमरा माउंट कर ही दिया। अब देखते हैं वापसी में ये कैमरा मिलता है या नहीं। So if this thing comes off, then I don't have outside footage and I don't have my Insta360 again. The only thing you say that the paint might come off. I don't think the paint will come off. You said. That has happened to other people. That's why it's not really recommended for suction cups, but I mean lots of people do it for sure. And I hope when we land back, I still have this camera here. I really hope so. Otherwise, bye 360. You'll have to fly pretty smoothly for us. Oh yeah. आइए अब आपको मिलवाता हूँ अपने पायलट से। मिलिए इनसे, ये हैं डिलन साहब। डिलन साहब सिर्फ पायलट नहीं बल्कि मेरे इंस्ट्रक्टर भी हैं। Hi Dylan. He is the one who is going to fly us with this plane and my life, everybody's life. And then you're going to do some flying too. It's not just me. Okay. We're going to show you how to So do this, and you then have you're doing it. you have to teach me to keep it under control. Yeah, Okay? we got you, man. You're in good hands. I promise. मुझे उम्मीद है कि बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस और बहुत ही कमाल का एपिसोड होने वाला है। तो चलिए कुछ ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सीधा एक्सपीरियंस की तरफ चलते हैं और उड़ाते हैं आज ये प्लेन। और ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा होता है वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि आप भी ये कर सकते हैं।
कैसे, कितने पैसों में और कहाँ, ये जानने के लिए पूरा एपिसोड देखिए। To control the nose, kind of going left and right, we're going to use the foot pedals inside the cockpit. What we're going to do, you press on the right one, and that's going to bring the nose over to the right. When we're down on the water, this is all, we're going to drop these into the water, and that's going to control us when we're being a boat. So you press down on this, it's going to bring this over this way, and kind of point the nose towards the right. Now you also notice, when we're flying in the air, this uses the rudder at the back, so they're connected to the same part. So when we're flying along, you effectively have little miniature rudders, but these are what help us control the plane when we're on the water as a boat. Oh, That's pretty much okay, awesome. So the same thing is used for both air and water. Yeah, exactly. And then we just have to remember to pull these up when we get out of the water, otherwise they're hanging down too low. Okay, and then for this thing also this is used? They were going to use the ailerons here, or what's going to roll the plane along this longitudinal axis. So let's say you're going to try and turn the plane to the right. What we'll do, just like in your car, kind of point the plane towards the right. Now what happens is this wing is going to be generating a little bit more lift than the other wing. So this is going to cause the plane, the wing to rise and the plane to bank towards the right. Yeah. But the ailerons alone won't turn the plane on themselves. You'll also need to involve the rudder, which we were talking about there. So you do a little bit of right aileron, a little bit of also right the rudder, rudder. which is the foot pedals inside the cockpit. If you turn to the left, a little bit of left rudder. So there's no tricks or anything. Very easy to remember. So, but little bit of left. Yeah, I fly the manual drones are like this. There you go. So I have to bank and I have to also tilt the nose. Yeah, it's Both exact, things, exact right? same kind of idea. Yeah, so the ailerons won't work. क्योंकि मैं प्लेन उड़ाने वाला भी हूँ तो उन्होंने मुझे प्लेन के इंस्ट्रूमेंट समझाए, कौन सा मीटर क्या करता है, पैडल कैसे काम करता है। सब कुछ ठीक से समझ तो नहीं आया, बट उनका कॉन्फिडेंस देखकर लगा कि अगर मैंने कुछ गड़बड़ भी किया तो वो संभाल लेंगे। Alright, let's do this. Let's do this. Yeah, let's go. Let's go. Let's go. हमने सब कुछ चेक किया है, इंजन चला करके पायलट साहब ने सब कुछ चेक किया है कि इंजन ठीक चल रहा है कि नहीं, उसके सारे इंस्ट्रूमेंट्स ठीक चल रहे हैं कि नहीं, ये सब जिससे हम लेफ्ट राइट करेंगे क्या बोलते हैं उसको मुझे पता नहीं, लेकिन वो सब ठीक चल रहा है कि नहीं, ये सब चेक हुआ है अभी। ठीक है, आई थिंक सब रिपोर्ट सही है। If you're ready, you can climb up here. You can grab onto this strut or there, and then just take a little step to the left. Yep. Wonderful. Now you're going to be on this side here. You don't have to slide over. I'll walk around to get in. But if you're ready, you can use these steps and climb up inside. Okay. 5 मिनट में प्लेन उड़ाना सीखे कोर्स करके मैं पहुंच गया अपने कॉकपिट में, रेडी टू फ्लाई। ये एलेक्स है जो मेरे काउच सर्फिंग होस्ट हैं, जो मेरे साथ आए हैं यहाँ पर, क्योंकि इस कंपनी ने मुझे कहा था कि हम आपके साथ आपके किसी एक या दो दोस्त को भी ये करा सकते हैं। तो दूसरा दोस्त की जगह पे ओली है, ओली वर्क्स विद देम एंड ही इज हेल्पिंग मी शूट ऑल दिस। सो ओली, थैंक यू सो मच फॉर द हेल्प एंड थैंक यू एलेक्स फॉर द हेल्प। It's a pleasure. Pleasure. It's a pleasure. Okay, so you guys should be able to hear me now? Yeah. You can hear me? Loud and clear. Can you guys hear us in the back as well? Copy that. Yep. Awesome. Mike Charlie X-ray, were you ready to go? We okay to go ahead, yeah? Go for it, Dylan. Okay, many thanks. So one of the nice things about flying here in Squamish, it's already beautiful on the ground. We don't actually have to go that far for things to become quite impressive. Yeah. Any direction you go from here, absolutely amazing. Yeah. We might get to watch a plane take off here first. I think there was someone there. Is anyone there? I don't see anyone. Go on the traffic, 185 inches, Gulf Kilo Juliet, entering the active, backtrack 15. Is everybody ready to go? Yep. Okay. Let's go. All right, let's go. Woohoo! क्लियरेंस मिलते ही डिलन साहब ने थ्रॉटल पुश किया, प्लेन रनवे पर दौड़ा और कुछ ही सेकंड्स के बाद हम हवा में थे। We got the Squamish River down here below us. Wow. Comes from the Pemberton ice fields up north of Whistler. Basically, we're just going to follow that river up. Once we clear these houses, we're going to follow the river up that direction. We'll go up behind the Tantalus Provincial Park. ये जो जगह आप नीचे देख रहे हो ना, ये है स्क्वामिश, वैंकूवर के नॉर्थ में एक छोटा सा टाउन। यहाँ आपको ग्लेशियर्स, पहाड़, लेक्स, रिवर्स सब मिलेंगे। स्क्वामिश सिर्फ एक टाउन नहीं है, ये एक प्लेग्राउंड है उन लोगों के लिए जो थोड़ा ज्यादा जीना चाहते हैं। थोड़ी हाइट पे पहुंचने के बाद डिलन साहब ने वो मैजिकल वर्ड्स बोले, अमित यू हैव द कंट्रोल्स। मैंने पहले सोचा ये मजाक कर रहे हैं, पर उन्होंने फिर से बोला टेक द कंट्रोल्स। आपको कैमरा में दिखेगा नहीं, पर मैंने स्टिक को बहुत डरते हुए पकड़ा था, पता नहीं एकदम से पसीने छूट गए थे यार। फिर उन्होंने थोड़ी और ट्रेनिंग दी और थोड़ी देर बाद डिलन साहब सिर्फ कम्युनिकेशन हैंडल कर रहे थे, क्योंकि प्लेन मैं उड़ा रहा था। So basically that little valley here, we're going to fly up the valley, kind of favoring the right hand. Why don't you take us over to the left here? Okay.
So we're going to point towards that valley there with those kind of clouds just up above it. Yeah. And we're going to do a climbing turn on the glaciers. Okay. Kind of just get us over to the left and then point right at the top of that mountain. Am I doing it? Yeah, you're doing this. I'm not doing it. I'm not doing it. मुझे लगा था ये बस एक फन राइड होगी, लेकिन यहाँ चीजों को बहुत सीरियसली लिया जाता है, बिल्कुल एक रियल ट्रेनिंग क्लास की तरह। डिलन साहब बहुत सीरियसली सब कुछ समझा रहे थे और जब मैं सही रिस्पॉन्ड कर रहा था तो अप्रिशिएट भी कर रहे थे। उड़ना तो कमाल था, पर लैंडिंग वो आर्ट है भाई। और हम किसी एयरपोर्ट पर नहीं बल्कि पहाड़ों के बीच छुपे एक एल्पाइन लेक पर लैंड करने वाले थे। तो डिलन साहब ने कंट्रोल वापस ली और मुझे बोला एंजॉय द व्यूज। और सच में यार क्या व्यू था वो। Here we go. We are on the water. Phantom Lake. Welcome. Woohoo! Wow, pretty nice and smooth landing. Well, thank you. All right. So what we can do here is we can pop open those windows again, and we can actually take our headsets off at this point. It's quite quiet when we're on the water. Wow. It's pretty awesome, man. Great job. You nailed it. Amazing. पानी पर लैंड करना जमीन से बिल्कुल अलग है, एकदम स्मूथ। लैंड होने के बाद मैंने डिलन साहब से पूछा क्या मैं बाहर जा सकता हूँ। थोड़ा हेजिटेट हुए वो, क्योंकि हम एक बहुत गहरे लेक के बीचों बीच थे और खड़े होने को सिर्फ एक पतला सा लैंडिंग गियर था। पर थोड़ी देर में सिर्फ मुझे परमिशन मिल गई बाहर जाने की। मैं बाहर आया, लैंडिंग गियर पर खड़े होकर ड्रोन उड़ाया और जो देखा भाई वो किसी मूवी के सीन के जैसा था। दिस इज हाउ ब्यूटीफुल कैनेडा इज। यार ये बहुत स्पेशल है यार, बहुत स्पेशल है। मतलब इस लेक के अंदर ये प्लेन उड़ा के लाना, चलो उड़ाया तो मैंने थोड़ा बहुत ही है, लेकिन इस लेक के अंदर प्लेन को लैंड करते हुए देखना, इस लेक में लैंड करना, मैंने ये कभी नहीं किया यार। This is something really special. Alex, what do you think? It's amazing, man. This is wonderful. Wonderful, right? Beautiful place on earth. Yeah. Dylan, I'm pretty sure you guys are super busy in summers. Yeah, absolutely. So if we can come here from like mid-July to middle of October if it's a good year for it, and then the rest of the year it'll be frozen. So then we go down to the ocean if we want to use this plane. And how long you guys can stay? Like I'm sure we are filming today, so we are like short of time. But how long you guys can stay People there? can pay to stay extra if they want. Usually we stay half an hour, 45 minutes or so, and then sometimes people want to come up and do some fishing, or they want to spend some more time swimming, picnic, all that kind of thing. So they Right. can pay to keep the plane here for a little bit longer if they want more time. And how long? Like can it be possible to keep the plane the whole day, like from morning to evening? Yeah, at that point we'd probably look at just dropping you off. We'd leave and then we'd come back.
but you could do Okay. that way as well. And how much do you like charge for this kind of thing? So to come here for just kind of like a tour for the half hour kind of thing, it's about $400 a person. If you wanted to do a thing where we drop you off and come pick you up, then you're gonna be paying the charter rate for the plane. Okay. Which is higher, of course. Yeah, a little bit. And the one which I did, where I also get to learn and fly Yeah. the plane, and also this like experience do this. is about like $750. It's kind of zoned for the introductory to flight done in our seaplane. Yeah. We also do a similar thing in our wheeled planes, where we obviously wouldn't be able to come to the lake, but you can do just the flying portion in one of the wheeled planes as well. Oh. But this is quite special, I think. Yeah, this is quite special actually. This is amazing, amazing. Thank you so much, John. Yeah, Thank you so much. Thank you so very much. I'm This having is- fun too. Don't worry, this is great. I don't get tired of coming here. I yeah, promise. I'm sure. Like this, you have the best job in the world. He gets to fly here, and he gets paid for this. The ultimate job in the world, man. It's pretty good. Yeah. How long have you been doing this, Dylan? So I've been flying here at Squamish for about 7 years now, actually. And where are you from? I'm from Alberta. So Oh. it's next one over there. I live in Whistler. Lived in Whistler for the last like 10 years or so. So I kind of like it over here now. But Mhm. yeah, no, it's pretty special, especially when you get to do this and call Yeah. it work, right? Yeah. And how much worth is this plane? Like This one what's would be the like about $500,000 for this one here. $500,000? It's a 1979 Cessna 185. These things are incredible. You'd never get rid of them. You just keep repairing and replacing, and Things you and they just keep keep it flying. going because they're just amazing machines. तो काफी मजा आया. So now it's time to move. Yeah, we'll Yeah? we'll get loaded up in the plane here, and then we're gonna fly down to Howe Sound. We're gonna go do another water landing in the Howe Sound. We'll go see kind of like evening sunset kind of light. Awesome. Yeah, it should be really beautiful. Let's go. Through the तो mountains. हम एक और जगह पे जा रहे हैं. यहाँ से उड़ेंगे और इस बार हम जो टेक ऑफ करेंगे वो पानी से करेंगे. पानी में आपने लैंड देख लिया, जमीन का टेक ऑफ देख लिया. अब हम पानी से टेक ऑफ करेंगे और फिर से पानी में ही लैंड करेंगे. So yes, let's go. What are you doing? Move the log or move the plane. थोड़ी देर वहाँ वक्त बिताने के बाद हमने फिर से टेक ऑफ किया एंड लेक से टेक ऑफ भी लैंडिंग जितना ही सुंदर था यार. और इस बार हमने समुंदर की तरफ रुख किया. And after a certain height, the plane controls were again in my hand. And Dylan साहब ना बार-बार कह रहे थे, you are very stable, तुम्हारा हाथ बहुत साफ है. Very smooth and controlled. Thank you. We're all over it. Put the balls in the center. That means we're not slipping around in our seat. All thanks to Microsoft Flight Simulator. Yes, there you go. And my instruction, I thought. Of course. Yeah. पर मेरे अंदर का इम्पोस्टर सिंड्रोम मान ही नहीं रहा था. मैं एक छोटे से शहर का लड़का जिसे साइकिल चलाने पर भी डांट पड़ जाती थी, वो प्लेन उड़ा रहा है. बताओ, इम्पॉसिबल नहीं लग रहा? तो मैंने एक टेस्ट किया. बीच में एक बार डिलन साहब बाहर फोटो लेने में बिजी थे और कंट्रोल्स मेरे हाथ में थी. तो मैंने स्टिक को ना दूसरे डायरेक्शन में मोड़ दिया और प्लेन घूम गया भाई. और तब मुझे यकीन हुआ कि मैं सच में प्लेन उड़ा रहा था. पायलट साहब को भी पता चल गया, लेकिन ही गॉट इम्प्रेस्ड विद माय फ्लाइंग स्किल्स. Taking right? Yeah, we're gonna go kind of around to the right here. We're gonna fly like just a little bit. We're gonna fly into that valley, but we'll kind of like just do a little bit of a right-hand descending turn. And then once we kind of finish this 180, we'll allow the plane to keep descending. Alex, how do you like it? It's amazing, man. Amazing, right? Experience. Amazing experience, man. Beautiful British Columbia. Exactly, exactly. Now this water here will likely be a little bit rougher than lake. Just a little. It should be nice and smooth for us, but it's going to be like a little bit more of a texture to it. There we go.
it's not very, How's very that? smooth. This is very, very smooth actually. Yeah, It's not not too bumpy at bad. all. Okay, there we go. Yeah. You can also look at the smoke and see it's basically going straight up. If anything ever so slightly favoring that way, that's a good indication of wind. Yeah, If but there's it's any straight, right? yeah, there's almost no wind at all. And then Yeah. if there's any like sailboats moored up, the boats are the same. They'll always point in towards the wind. So you can also look at the sailboats to see what they're doing. So, but if there is no wind, you can pretty much take off any side. Yeah, if there's no wind at all, we could take off any direction. Now, unless there's like a current moving, so like rivers and things, you would consider taking off into or against the current as well. But no wind, you can take off. हमने एक सी लैंडिंग भी की क्योंकि पीक विंटर्स में लेक्स जब फ्रीज होते हैं तो ये फ्लाइट ओशन में ही लैंड करती है। कुछ देर वहां रुकने के बाद हम फिर से उड़ गए, इस बार गोइंग बैक टू द एयरपोर्ट, और एक बार फिर से कंट्रोल्स मेरे हाथ में थे। और लैंडिंग से पहले जब मैंने आखिरी बार कंट्रोल्स डिलन साहब को वापस दिए तो मेरे दिमाग में कुछ बातें चलने लग गई। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। आज से कुछ साल पहले तक हमारे घर में 4 व्हीलर भी नहीं था, और हमारे यहाँ इंटरनेशनल ट्रिप तो छोड़िए, दूसरे शहर जाना भी एक इवेंट होता था। हम जैसे लोगों के लिए प्लेन उड़ाना ये सब फिल्मों में होता है यार। लेकिन आज इस जगह से एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बाउंड्रीज सिर्फ मैप्स पर नहीं, हमारे दिमाग में भी होती हैं, और अगर आप उस बाउंड्री से बाहर निकल जाओ तो सब कुछ पॉसिबल है। We are on a final approach. 200. 100. Come traffic, come clear, come back left down 115. And touchdown. Woo! Smooth. Yeah, that was a greaser. That was a good one, actually. Wow. Yeah, great. We're back. Welcome back to Smosh. Awesome. We are back. Wow. Welcome back. Thank you so much, man. Oh, you're very welcome. Thank you so much. It was a pleasure. I'm really glad you enjoyed it. Was amazing, amazing, Yeah. amazing flight. Hard not Smooth to landing enjoy it. all 3 times. Yeah. How do you do that? Amazing. Amazing. Thank you once again, Dylan. You're very welcome. Thank you so Thank much. you for joining us. I hope you It enjoyed was an yourself. amazing trip. There you go. Guys, come here and enjoy this with this company, Sea to Sky Air. Come see us. Come see the sights. There was one moment where we were up there and we were over the ocean and we were turning and I didn't even realize we were turning, which is exactly what Dylan said at the beginning. You know, it's like we shouldn't feel the plane move, and there were points where I was like, oh, we're going back now, you know, like I thought you did a great job, man. Yeah. Natural. It's all about Microsoft Flight Simulator. Now I'm back on tarmac on the land. So few thoughts about this trip. बहुत मज़ा आया। सबसे पहला वर्ड यही रहेगा भाई कि बहुत ज़्यादा मज़ा आया। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें करी है मैंने और आगे भी करना चाहता हूँ, लेकिन जितने भी मेरे टॉप एक्सपीरियंसेस है ना, ये उनमें से एक था। वन ऑफ माय टॉप ट्रैवल एक्सपीरियंसेस में से एक ये था। हमने 3 अलग अलग तरीके की लैंडिंग और टेक ऑफ्स करी हैं, तो उसका एक्सपीरियंस प्लस रास्ते में मुझे फ़्लाई करने का मौका मिला, और ये कोई मजाक नहीं था, लिटरली मैं फ़्लाई किया है मैंने, ठीक है। अगर आप लोगों को भी ये देख करके बहुत मज़ा आया है तो आप यहाँ इस जगह पे आ सकते हैं। स्क्वामिश एक छोटा सा टाउन है वैंकूवर के आगे, कनाडा में। वैंकूवर से करीब 1 घंटा ऊपर नॉर्थ में है। वहाँ पर ये कंपनी है सी टू स्काई एयर, और ये इस तरीके के ट्रिप कराती है जिसमें आप लेक के ऊपर, समुंदर के ऊपर जा सकते हैं। लेक के ऊपर आप सिर्फ समर्स में जा सकते हैं अंटिल फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। उसके बाद आप सिर्फ समुंदर में जा सकते हैं क्योंकि लेक पूरी तरीके से फ्रीज़ हो जाती है, बर्फ़ हो जाती है, तो वहाँ पर लैंडिंग नहीं हो सकती। बट समर में आप ये ट्रिप कर सकते हैं। बहुत कमाल का ट्रिप है। अलग अलग स्टेजेस हैं। प्राइस आपको इनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट आपको इस एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये पूरा एपिसोड एज अ ट्रैवल ब्लॉग बहुत अच्छा लगा है तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल, बिकॉज ऐसे और भी बहुत तरीके के बहुत अमेजिंग एपिसोड्स आप देखेंगे इस चैनल पे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस एपिसोड। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नए एपिसोड में। अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग टेस्टी टूरिस्ट। बाय बाय, टेक केयर। Thank you, brother. Thank you so much. You're very welcome. Thank you. Ollie, thank you so much for Thank you, bro. That was filming amazing, this, man. That was amazing. Thank you so much. Great job. It was. Alex, my bro. Thank you, Thank you man. so It was much, brother. amazing. Thank you. Thanks.